his iQOO Neo 7 with me, and the phone was launched in the Indian market on Feb 16, 2023. और आज इसको हम करेंगे unbox. This smartphone comes in two different color options, frosted blue and interstellar black. जो मेरी color unit है ये होने वाली है blue because that's what I read on the box. You're watching Gadget Times. This is me, Pavni Jain, and now it's time to unbox. So this is how the new iQOO Neo 7 looks like. So what do you guys think of the price of this smartphone? Let me share that with you all. So this starts at Rs 29,999. This price is for its 8GB RAM paired with 128GB of internal storage. वहीं पे जो मेरी unit है, this is 12GB RAM paired with 256GB of internal storage, जिसका price है 33,999. Now, since we are already looking at the rear panel, let's just talk about it a little bit into details. So this is made of plastic. You get a plastic rear panel and also a plastic frame, which is one of the reasons why this phone is so lightweight. This weighs only 193 grams. बाकी rear panel पे आपको दिखाई देगा एक prominent camera module which houses 3 cameras in total. The main camera is a 64 megapixel sensor, accompanied by a 2 megapixel macro camera and a 2 megapixel of depth camera. तो ये थे पीछे के कैमरास की बार. Now if we move to the front of the smartphone, this houses a single punch hole camera which is a 16 megapixel selfie shooter. इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे काफ़ी थिन बेजल्स. द बेजल्स आर नॉट वेरी थिक. द स्क्रीन measures 6.78 inches AMOLED panel and it also supports 120 Hz refresh rate. Now the screen also houses the under display fingerprint scanner, so you don't get one on the power button or at the rear panel. आपको डिस्प्ले में ही दिखाई देगा. Now if we talk about the software, this smartphone runs on Android 13 topped with FunTouch OS 13. So other than that, as for the hardware part, the phone also packs MediaTek Dimensity 8200 system on chip. Now as for the battery, the iQOO Neo 7 consists of a pretty standard battery size which is a 5000 mAh battery capacity, but the phone also supports fast charging which is 120 watt fast charging support. अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो आपको काफ़ी सारे थर्ड पार्टी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स दिखाई देंगे, स्पेशली सम सोशल मीडिया ऐप्स, फॉर एग्जाम्पल स्नैपचैट, लिंक्डइन एंड बायजूस. अगर आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, आई थिंक इट्स प्रीटी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज टैप ऑन द आइकॉन एंड यू हैव टू टैप अनइंस्टॉल ऐप एंड यू कैन ईजिली डू दैट. सो बेसिकली आपको थर्ड पार्टी ऐप्स मिलती हैं बट यूजर्स कैन मैनेज दैट मैनुअली. अब क्योंकि हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो कैमराज भी एक्सप्लोर करते हैं. So the first thing that I saw here is that you get a dual view video mode. उसके अलावा आपको बाकी बेसिक सारे फीचर्स मिलते हैं कैमरा ऐप में, जैसे कि नाइट, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, व्लॉग, मूवीज. दिस इज समथिंग न्यू जिसमें आपको अलग अलग तरीके के फिल्टर्स भी दिखाई देंगे. आई थिंक यू नीड वाईफाई कनेक्शन टू ऑपरेट दैट. अगर आप मोर पे टैप करेंगे तो आपको और काफ़ी सारे प्लेंटी ऑफ फीचर्स यूल गेट टू सी, जैसे कि आपको 64 MP मेन कैमरा से शूट करना है, सो यू कैन सेलेक्ट दैट. Pano, slow-mo, time-lapse, pro mode where users can manually adjust the settings, document, sports and dual view video mode जो हमने आपको already दिखा दिया है. So these are like a lot of options especially for the camera lovers and considering the price. तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई देती हैं. कितनी यूजफुल हैं, कितनी पावरफुल हैं, वो आपको पता चलेगा हमारे रिव्यू वीडियो में. सो अभी के लिए मोर और लेस आपको बता दिया है कि आपको iQOO Neo 7 के साथ क्या क्या दिखाई देगा. सम डॉक्यूमेंटेशन, प्रोटेक्टिव केस, 120 watt fast adapter, USB-C cable, and one really important thing which is a 3.5 mm connector to Type-C connector, SIM ejector tool, and that's all. बाकी 29,999 में आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो चुके हैं. Oppo Reno 80 is one of them. दोनों का रिव्यू आपको चैनल पर जल्द ही दिखाई देगा. And stay tuned to Gadget Times for more such videos. Thanks for watching this one.